हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हम जा रहे हैं कोणार्क और यहाँ बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है। मैं आपको ऐसे ही अपडेट करती रहूँगी आगे का, और हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं, जस्ट वेट एंड वॉच।
2 घंटे की ड्राइव के बाद हम पहुंच चुके हैं चंद्रभागा और ये है सी बीच। और यहाँ बहुत ही ज़्यादा धूप हो रही है, जैसे कि आप सबने देखा था रास्ते में इतनी बारिश हो रही है, बट यहाँ इतनी धूप हो रही है कि आप सब टैन पड़ जाएंगे। अब हम चलते हैं लंच के लिए। टिल देन स्टे कनेक्टेड। अब हम जा रहे हैं लंच करने को बीच रिसॉर्ट। चलो। जैसे कि आप देख सकते हैं इधर है समुद्र और इधर है इको बीच रिसॉर्ट। बहुत ही सुंदर जगह पे है ये। एक साइड है समुद्र और दूसरी तरफ है इको बीच रिसॉर्ट। नाउ वी कैन हैव अ गुड नाइट। आगे ये रेस्टोरेंट एरिया है, खाने चलते हैं, देखते हैं आगे जाओ। अब आ गया है हमारा लंच और हम लोग बहुत लाइट सा खाना खा रहे हैं, देख सकते हैं आप जैसे कि। और अब हम चलते हैं कोणार्क। पहुंच चुके हैं अब कोणार्क में और अब हम अंदर चलते हैं। ये एंट्री है और कोविड की वजह से यहाँ ज़्यादा लोग नहीं हैं, बट फिर भी बहुत सारे ट्रैवलर्स हैं। सो यहाँ पे कोविड सिचुएशन की वजह से इन्होंने टिकट डायरेक्टली स्कैन करने के लिए कहा है। सो अब हम स्कैन करेंगे, पे करेंगे। ये हमारी टिकट्स है और अब हम चलते हैं अंदर। हम लोग आ पहुंचे हैं कोणार्क सन टेम्पल पे। चलिए अब हमें उन्होंने बारकोड रीड करने को कहा है, जो टिकट्स हमने वहाँ बुक की थी। और अब अंदर चलते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं सन टेम्पल पे और आप सब देख सकते हैं इसके क्लोज व्यू।
अब हम आप पहुंचे हैं वीडियो के आखिर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट बिलो। सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा और लाइक भी। और मैं आपसे यूं ही फिर से मिलने आऊँगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग पे। टिल देन स्टे कनेक्टेड।